Jai Hind student, welcome to biology class. So today we'll be going to discuss a very important life process, that is transportation. Okay, so now the first question is, what is transportation? Transport करना means एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना. ओके, या कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. सो here here in transportation we will be studying the transportation in humans being also and in plants also separately. So now we will discuss about the transportation in human beings, how the transportation occur in human being. As you all know, we eat food. फूड हम खाते हैं, उसके बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है. ओके, नाउ आफ्टर एसिमिलेशन these what happen, the transportation of these food substances is done. मीन्स एक जगह से दूसरी जगह इन फूड सब्सटेंसेस को पहुंचाया जाता है. कहाँ पहुंचाया जाता है? टू द डिफरेंट ऑर्गन. एज यू ऑल नो, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली, देयर आर ऑर्गन्स विच वर्क कंटिन्यूसली. ओके, सो उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ये कहाँ से मिलती है? दे गेट द एनर्जी बाय द फूड विच वी ईट. सो अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर हैज टू बी सम ट्रांसपोर्टिंग चैनल, ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड होना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्ट हो. So blood is the main transporting liquid which help in the transportation of various nutrients, okay, from one place to another. Now in human beings there are two types of transporting system. Okay, if you talk about, so the first is circulatory system. You are already familiar with this and you have studied also in your lower classes. Now the second important system of transportation is lymphatic system. So we will be studying this also one by one. Then what else we are going to study in transportation in human beings? If you talk about circulatory system, in circulatory system we will be studying about blood. Then we'll be studying about blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. And in blood we will be studying about the different components which are present in blood, that is plasma, RBC, WBC, platelets. Then we will be studying about the main pumping organ, that is heart. Okay, and under heart we will be studying about pulmonary circulation, systemic circulation, then what is heartbeat, what is pulse rate, blood pressure, then systole, diastole. So these all are the things which we will be going to cover in the human circulatory system. Okay, after that we will be discussing about the lymphatic system. Okay, so let's start with the human circulatory system. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, एंड हाउ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क. ओके ओके, नाउ so starting with the circulatory system. Okay, first we will talk about the blood. As you all know, blood is a red colored liquid which circulates in our body. Okay, यही एक circulating liquid होता है हमारी बॉडी में, जिसके हेल्प से सारे न्यूट्रिएंट्स दे सर्कुलेट इन अ बॉडी. नाउ so the blood is red in color because it contains a pigment called hemoglobin. हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड जो है रेड कलर का होता है. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है? बिकॉज इट बाइंड्स द डिफरेंट ऑर्गन्स. ये बाइंडिंग का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ब्लड ही है जो कि पूरी बॉडी में फ्लो करता है. ओके, एंड दिस ब्लड इट कंसिस्ट ऑफ, if you talk about the composition, it consists of plasma. It also consists of RBCs, WBCs and platelets. ये main components होते हैं blood में. Okay, now plasma जो है, plasma is a liquid part. It is a liquid part of the blood and this is colorless liquid.
and it mainly contains water and also many other substances which are dissolved in it. So प्लाज्मा जो होता है it contains about 90% water. इसमें 90% जो है water होता है, okay, and then rest 10% it constitute proteins, then digested food, common salt, waste products, hormones, ये सब होता है, okay. So and in this plasma only different cells they floats. कौन कौन से cells हैं? RBCs, WBCs and platelets. They are immersed in this liquid only. Okay. अब हम एक रैपिड रिवीजन करेंगे कि about RBC, WBC and platelets as you already have studied about them. Now RBCs जो है it is red blood cell जिसको हम erythrocytes भी बोलते हैं, okay, and the RBCs they are red in color due to the presence of red pigment called hemoglobin, okay. Now this RBCs the main function of the RBC is to carry oxygen from lungs to all the cells of the body, okay. ये ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन कर जाता है, इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन that combines with oxygen to form oxyhemoglobin and then this move to the different cells और वहां पे इसका dissociation हो जाता है. Hemoglobin or oxyhemoglobin it breaks into hemoglobin and oxygen and then oxygen is picked by the tissues of the different organs, cells पिक कर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस रिलीज कर देते हैं उसी ब्लड में, okay. Now this hemoglobin it also carries some of the carbon dioxide also from body tissue to the lungs, okay. RBCs जो होते हैं they do not have any nucleus, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है and these RBCs have to be made quickly, इसलिए इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी बहुत कम होती है. It is about 4 months, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी RBCs हमारी बॉडी में बनते हैं because they have a very short lifespan and it has been estimated that about 3 millions of red blood cells of the human blood they die every day, ठीक है. 3 मिलियंस जो RBCs होते हैं हमारे ब्लड में वो हर रोज उनकी डेथ हो जाती है, हर रोज वो खत्म हो जाते हैं. but 4 times that number are made in the bone marrow every day, पर जितने मरते हैं उसके 4 times जो हैं वो बनते भी हैं. इसीलिए so when we donate blood to save the life of a person then the loss of blood from a body can be made up very quickly within a day. वो बहुत जल्दी, इसीलिए हमें बहुत वीकनेस नहीं फील होती है क्योंकि वो जो लॉस होता है हमारी बॉडी से ब्लड डोनेशन के बाद तो वो बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाता है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द WBCs. जो WBCs होते हैं दे आर नोन एज वाइट ब्लड सेल्स और इनका काम क्या होता है? दे फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, okay. So that's why these WBCs help to fight against germs and also foreign bodies जो कि बाहरी bodies होती हैं which cause disease. So they are also known as soldiers of our body, इसीलिए उनको soldiers भी कहा जाता है. और जो RBCs जो WBCs होते हैं वो कुछ chemicals भी बनाते हैं हमारी body में. These chemicals are known as antibodies जो कि हम infection से फाइट करते हैं, हेल्प करते हैं फाइट करने में, ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर द टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल, दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में बनता है. एंड प्लेटलेट्स ऑल्सो दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है. एंड द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज दे हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. जब हमको कभी चोट लग जाती है, कट हो जाता है या वूंड हो जाता है तो व्हाट हैपन, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होने लगता है. तो ये जो है प्लेटलेट्स ये ब्लड फ्लो को स्टॉप करते हैं, ये क्लॉटिंग कर देते हैं एंड द ब्लड स्टॉप्स, ओके. सो दिस वाज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, अबाउट द डिफरेंट सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट.
heart is a pumping organ. Okay, it is a pumping organ and it is very small.